Ladies and gentlemen, a very, very warm welcome to Rising India Summit 2023, brought to you by the News18 network. Over the next several sessions, you will get a chance to hear from some of the finest political leaders, sportspersons, industry captains, entrepreneurs, and entertainers whose intellect and energy are powering India's rise. But ladies and gentlemen, we need to tell you that this time around, this edition of the Rising India, News18 Rising India, is a departure. It also sets out an example because we are going to celebrate the real heroes, those who toil hard, quietly, on ground, across the length and breadth of the country. We are going to celebrate them and draw inspiration from them for selfless seva. And may I now welcome Mr. Abhay Bhutara, Managing Director, Poonawalla FinCorp, to deliver the opening address, please, Ajay ji. Mr. Bhutara is one of India's most distinguished professionals in the world of finance. He's a seasoned finance expert with more than 15 years of diversified experience in the commercial and retail domain. Abhay, all yours. Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm honored to be here today as a part of the Rising India Summit. I would like to express my gratitude to the PMO and the entire Network 18 group for introducing this concept of Rising India, which recognizes and celebrates the achievement of our unsung heroes who are making our nation a better place. India is a country with a rich culture, diversity, and tradition, and we are proud of our progress and potential as a nation. India's rise as a global powerhouse is undeniable. Under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has emerged as a major player in the global economy. Last year, we surpassed UK to become the 5th largest economy in the world, and we are looking forward to becoming a $5 trillion economy in the next couple of years. Today, we are the 3rd largest ecosystem in the world in terms of startup and so many other things, but we have more than 100 unicorns with a cumulative valuation of more than $350 billion. And we are leading the global fintech adoption rate as we speak. As we celebrate the Rising India's real heroes, it is essential to recognize these unsung heroes who work at a grassroots level and making a real difference. Our unsung heroes who have risen beyond their challenging circumstances are the torchbearers of Rising India who will shape tomorrow's India. I too come from a humble background, small town called Latur in Maharashtra. I have built successful startups in the recent past like Tap Capital, Poonawalla Finance. As of now, I am leading Poonawalla FinCorp, which is the financial services arm of the Poonawalla Group with a valuation of more than $3 billion. At Poonawalla FinCorp, we remain committed to fulfilling the aspirational goals of entrepreneurs and professionals, helping them pursue and achieve their dreams through our customer-centric product offering. Our digital lending platform has simplified the process of MSME in the formal credit for MSME, and we are leveraging the power of technology to drive financial inclusion through last mile connectivity across India. As the famous saying goes, the future belongs to those who believe in beauty of their dreams. Let us all believe the power of our dreams and work with a strong dedication to turn those dreams into reality for an inclusive and equitable Rising India. Jai Hind. Thank you very much for joining us here on Rising India. The last time we spoke was in June of last year at the CNN News 18 Town Hall. You've become an even bigger rock star on social media and on traditional media since then. But let's talk brass tacks. Last June when we last spoke, the Russia-Ukraine war was just 3 months in. Now it's over a year. Did you expect this war to continue this long? And how has it changed global geopolitics? How has it changed your job in the last year? Well, it was, I don't think it's a fair question to say, did you expect something to happen or not? Because a lot of people didn't expect the conflict to happen at all. But many things have changed. Many things have changed because the West has changed. Definitely, Europe has changed. Russia's relationship with the West has changed. I think that has other consequences. My sense is Russia's relationship with Asia will consequently change because it will turn more eastwards than it has done in its history for a long time.
In many ways, issues like energy security, food security have come to the fore. There's also, it's also opened up a bit of a north-south divide. So at the moment you have a east-west friction and a north-south divide. So it's really made the world a much more difficult place. So when you say the world has become a much more difficult place, a country like India, we are the voice of the global south. We also have very deep linkages with the West and of course with the East. How does India play these deep divisions? We are to a great extent the voice of the global south because I think one, there is a natural empathy from our similar history, but also because we have made an effort. I mean, it's not something which just happened by itself. You've had G20 summits before. To the best of my knowledge, no other country said, okay, we are 20 countries around the table. There are 180 countries which are not around this table. So should we make an effort to find out what their expectations are of us? I think, to the best of my knowledge, we are the first country to have done that. And we actually, starting with Prime Minister himself and, 5 of us, including Piyush, we all spoke to our counterparts. We actually consulted 125 nations with this one question, which is we're going into G20, so tell us your key concerns and what is it we can articulate. That's one part of it. I think the other part of it is also we have in this whole period since February 24th last year, we have tried to press for you can say a return to peace, a return to negotiations. Yeah. In that sense, we have taken an independent position. I wouldn't say we're the only ones, but we certainly are among the more prominent ones. I do believe there is a real body of opinion out there, including in the G20. Mm-hmm. I would say a country like, say, Mexico or Brazil or Argentina or Indonesia, Saudi Arabia. I think many of them share similar views. Probably we've been the more outspoken among them. So both in terms of the north-south divide as well as the east-west polarization, I think we have tried to be the bridging force there. And the world needs somebody like us. There seems to be a bit of a change in Chinese diplomacy, if you will. You're seeing the moves that they're making vis-a-vis Iran and Saudi Arabia. They've also floated this 12-point peace plan with Ukraine. What do you make of it in general terms? Do you think that China is trying to play a major global role? And do you think that they're trying to sort of fill in a void they believe the US is leaving behind? Look, I mean, no question that if you take any metric in the last 20, 25 years, I would say maybe even last 40 years, in many ways, China has gone up. So have we. Yeah. Okay. Maybe not at the same pace. Frankly, if we had honestly had this government, I know this is a very biased statement, but if we had had a government like this 25, 30 years ago, maybe we would have gone up faster. But at least today, if you look at the progress in the last decade, do also see that just like China's reach and influence and equities grow, ours too are growing. But in this particular case, what you are mentioning, I think you have a very complex regional problem in which obviously China is involved. The parties have found China useful in whatever that they are doing. And that is something which is a fact. You are now a social media star, right? Do you plan these things? Ki when I go here, I'll give them this bite, ye viral ho jayega. I mean, even when we were outside, people are standing to take selfies with you and so on.
How do you see this newfound stardom? I would say it's, as you can see, even from my hesitation, that I'm not prepared. Okay. Look, mostly it happens in a conversation, like you and I are having. It's something you say because somebody has provoked you, or somebody has pressurized you, or somebody has very cleverly, like you, manipulated you. So you end up saying something. But I guess it's the times, isn't it? I mean, this is an era where people would pick up a sentence, a phrase or something and move it beyond. I take it in that spirit. This is my last question. Since you brought up multiple choice questions, I'm going to give you a multiple choice. You can either confirm, deny, or neither confirm nor deny. Is the party prepping you to contest the Lok Sabha election next year? I have no idea. That's not part of the options, by the way. It doesn't follow any of your... but my Rajya Sabha is due this year. Oh, nice. So I would suggest watch my Rajya Sabha. Okay. Ladies and gentlemen, the External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar. अमित शाह जी, आपका राइजिंग इंडिया समिट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ समय लेके बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं। हम पिछले 4-5 साल से राइजिंग इंडिया समिट कर रहे हैं हर साल। इस साल की थीम थी राइजिंग इंडिया रियल हीरोज़। हम उन लोगों पर स्पॉटलाइट डालना चाहते थे जो आम आदमी हैं देश के, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, जिनको कि आपकी सरकार ने भी पद्मा अवार्ड्स के थ्रू जो है उनको रिकग्निशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन ऐसे लोगों के संग किया है। तो सबसे पहला सवाल राइजिंग इंडिया समिट पर मेरा ये होगा कि आप राइजिंग इंडिया को, पिछले 9 साल से आपकी सरकार है, आप कैसे देखते हैं इंडिया राइजिंग को, और इसमें रियल हीरोज़ का योगदान कैसे रहा है? देखिए, ये विगत 9 साल में भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध किया है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अर्थतंत्र का सुधार करना हो, चाहे डेमोक्रेसी का रियल परकोरेशन करना हो, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथी करना हो, केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बनाकर इसको दुनिया के सामने रखना हो, अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। रक्षा और रक्षा की आत्मनिर्भरता, दोनों क्षेत्रों में शायद आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसी एक दशक में काम हुआ है, तो वो ये 10 साल के अंदर हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, तीनों हॉटस्पॉट को करीब करीब एक प्रकार से इस पर संपूर्ण प्रभुत्व आज हमारी एजेंसियों का हमने प्रस्थापित कर पाए हैं। ढेर सारे क्षेत्रों में भारत ने बहुत अच्छा किया है और उसका 7 अर्थ में यश हर क्षेत्र में ग्राउंड पर परफॉर्म करने वाले सभी नागरिकों को जाता है। ये जरूर है कि ये तो पहले भी थे, परंतु व्यवस्था सुधरती है तब भी हौसले के साथ। जब रियल हीरोज आगे नहीं आते हैं तो ये परिणाम नहीं मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस नींव पर मोदी जी ने जो हमारे सामने एक स्वप्न रखा है कि 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत नंबर 1 होगा, सर्वप्रथम होगा। इसको हम निश्चित ही सिद्ध कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। आपसे फिर कुछ महीनों बाद मुलाकात हो रही है और एक दिलचस्प समय पे मुलाकात हो रही है। चुनाव आ रहे हैं और सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है राहुल गांधी का मुद्दा। तो मेरा पहला सवाल होगा राहुल गांधी पर। सूरत के कोर्ट से उनका कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सज़ा सुनाई गई और तुरंत ही वो डिसक्वालीफाई भी हो गए और आप लोगों ने जरा भी देर नहीं की उनको बेघर करने में। तो इसको आप
कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे एक सिंपैथी का माहौल भी बन सकता है राहुल गांधी जी के लिए? देखिए राहुल जी, अगर आपने ये पूरे कानून को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरा स्टडी किया होता तो आप मुझे सवाल ही नहीं पूछते। मगर खैर अच्छा ही हुआ पूछ लिया, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से समग्र देश की जनता को रियलिटी बताना चाहता हूँ। हमारा जो कानून था, वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना दो अलग बात है। तो दोष को भी स्टे कराना है, सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी, सेंटेंस हो सकता है। अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है 2013 में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया कि 3 महीने आपको नहीं मिलेंगे। क्यों देना है? चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे? जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 2013 का है, जब राहुल जी की माता जी के नेतृत्व में यूपीए चलता था। हम तो दूर दूर तक नहीं थे। अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में कि इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले, विड्रॉ कर लिया गया जी। आज अगर वो कानून होता तो वो शायद बच जाते, इतनी हाई तौबा नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? कहां से जनरेट होती है ये एरोगेंसी? कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। अमित जी, थोड़ा आने वाले चुनाव, कर्नाटका के चुनाव की ओर देखते हैं। कुछ प्रदेश के चुनाव इस साल जो हैं बड़े चुनाव हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और ये एक तरीके से 2024 के पहले एक सेमीफाइनल मैच है। तो आप कर्नाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं? आज क्या लगता है आपको, वहाँ पर स्थिति क्या है? कितनी सीटें देते हैं आप? ये सवाल मैं हर बार आपसे पहले पूछता हूँ। देखिए, मैं कर्नाटक 9 दिन लगाया हूँ, चुनाव की घोषणा की पहले आज ही हुई है, और करीब करीब कर्नाटक के जो 5 क्षेत्र है, मुंबई कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, मैसूर, बेंगलुरु, इस तरह के जो 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र में मैं जाकर आया हूं और 9 दिन तक डिटेल दौरा किया है। मैं आपको पक्का असेसमेंट कर रहा हूं कि हम निश्चित रूप से हाफ वे मार्क से काफी आगे रहेंगे। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित जी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जो है ऑपोजिशन को बहुत डर है, कहती हैं कि जो हमको हैरेस करते रहते हैं, सरकार इनका इस्तेमाल करती है उन लोगों को परेशान करने के लिए। जरा भी ऐसा नहीं है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और हमारी ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। जी, कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात करना चाहूँगा।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल। तो इन तीनों स्टेट्स में आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा? देखिए, तीनों राज्यों में अभी चुनाव की देरी है, मगर तीनों राज्यों का मेरा दौरा हुआ है। राजस्थान का कम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज़्यादा दौरा हुआ है। मैं इतना बताता हूं कि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार की खिलाफ जबरदस्त रोष का माहौल मैं देखकर आया हूं, और मैं बहुत आशान्वित हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होने जा रहा है। और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। अमित जी, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूं, पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। एक सवाल जाते जाते बताइए, आप रिलैक्स कैसे करते हैं? कभी छुट्टी लेते हैं, कभी कुछ? तो अभी आपके साथ बैठकर ही रिलैक्स हूं भैया। देखो भाई, मन में जो है वो करते रहो, अपने लक्ष्य के अनुरूप करते रहो, अपनी मान्यता के अनुरूप करते रहो, कभी थकान नहीं लगेगी। अपने मन से विपरीत करोगे, अपनी आइडियोलॉजी से विपरीत करोगे, अपनी मान्यता से विपरीत करोगे तो थकोगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अपनी मान्यता के अनुसार काम करते रहोगे तो थकान कभी नहीं लगेगी, और इसीलिए मुझे कभी नहीं लगती। मुझे पता है कि मुझे जवाब मिलेगा नहीं, पर मैंने फिर भी कोशिश की। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राइजिंग इंडिया में आए, आपने हमारे सारे सवालों का बहुत लंबे समय तक जवाब दिया, हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।